Hello, students. Today we are going to learn a very beautiful story and encounter of a special kind, which is written by Tapan Mukherjee. This is a story by Tapan Mukherjee about a young boy who rescued, nursed, and saved a baby langur. ये जो कहानी है तपन मुखर्जी ने लिखा है और उन्होंने तब का लिखा है जब उन्होंने उसके बारे में लिखा है जब वो यंग थे, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, जब वो एक यंग युवा लड़के थे। एंड ऑन दैट टाइम ही रेस्क्यूड, उन्होंने उस टाइम बचाया था और सेवा की थी एक बेबी लंगूर की। और दैट बेबी लंगूर was attacked by a dominant male langur with an intent to kill. उसके ऊपर जो है एक बड़े मेल लंगूर ने अटैक किया था, मारने के ध्येय से। तो द स्टोरी डिपिक्ट अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। ये जो स्टोरी है ये बताता है कि कैसे जो है एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड एनिमल एक समझदारी को दिखाता है। एक मनुष्य के बीच मनुष्य के बीच समझदारी, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ मैन एंड एनिमल, दिस स्टोरी वाज टेलिंग अबाउट दैट। ये जो स्टोरी जो है उसके बारे में बताता है कि किस तरह से मैन और एनिमल का बॉन्डिंग है। लेट्स स्टार्ट एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इट मीन्स एक अनोखा मुकाबला, मुठभेड़। एनकाउंटर इट मीन्स मुठभेड़, आमना सामना होना। तो एक ऐसा आमना सामना जो कि राइटर के लिए अनफॉरगेटेबल था, कि जिसे वो राइटर कभी भी भूल नहीं सकता था। See how the writer described his childhood days where he was a leaf and what was his father. My father was a medical professional working. He said that his father was a medical professional working. Here we can ask the question like what was writer's father working? So what was writer's father working? Writer's father, अब यहाँ पे the writer said that, so that he used my pronoun, but we have to write writer's. Writer father was a medical professional working for a private company in a Raniganj in a West Bengal. Here again we can ask the question, where was writer's father working? राइटर के फादर जो थे वो कहाँ वर्किंग करते थे? तो राइटर्स फादर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन अ रानीगंज इन अ वेस्ट बंगाल. It means he was working in a West Bengal. The offices of the company were housed in a individual bungalow. यहाँ पे जो घर थे, ऑफिसेस थे, वो बनाए गए थे, वहाँ पे रहने की व्यवस्था थी इंडिविजुअल बंगलो की तरह, इनसाइड अ लार्ज कैंपस, एक लार्ज कैंपस के अंतर्गत बनाया गया था. सी हियर द मीनिंग हाउस्ड. हाउस्ड इट मीन्स प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू लीव, जहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है. इट्स कॉल्ड द हाउस. Here we can ask the glossary, find out the one word, provided facility to leave. Provided facility to leave के लिए one word बताओ. Which word come for that? कौन सा शब्द जो है उसके लिए आया है? तो here the word come housed. यहाँ पे
हाउस्ड वर्ड जो है ये आया है प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू लीव. द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेंट. एडजेंट मतलब अटैच्ड, सटा हुआ, लगा हुआ होना. इट्स कॉल्ड द एडजस्ट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन. तो यहाँ पे जो क्लब था, ऑफिसर्स क्लब था, वो अटैच था बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन. इट मीन्स राइटर के गार्डन के साथ में क्लब अटैच था, उसका बाउंड्री वॉल. Here we can ask the question, what was attached to the boundary wall of writer's garden? What was attached? The officers club. Here we can ask the again question, where was the officers club? The officers club was to the boundary wall of writer's garden. The compound was a luxurious and green grass, colorful flowers, and host of tall and majestic trees. That was the description of the compound. कि वहां पर जो था, the compound was a luxurious, पूरी सुख सुविधा, luxurious, it means सुख सुविधा से भरा हुआ था. With a green grass, colorful flowers थे, and host मतलब पोषित होना, भरपूर होना. Host of all tall and majestic trees. Majestic, it means आलिशान, भव्य. वहां पर आलिशान ट्रीज थे. Here we can ask the question, describe compound where the writer live. To describe that the compound was a luxurious with green grass. Second point, colorful flowers and host of tall majestic trees. Here we can ask the question, find out the describing word for the grass which come. तो यहाँ पे grass के लिए describing word आया है green. Green is the adjective word which come for the grass. Flowers, describe the flowers, describing word. Which word is coming for the flower? So here, colorful. This adjective word is come for the flowers. Either we can ask, underline the adjective words in this line. The compound was a luxurious with a green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. So there is the adjective word which come for like a luxurious, green, colorful, majestic, tall. These words are the adjective word which describe the compound. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attracted the squirrels and many species of birds. अब यहाँ पर कई सारी जगहों पे सीजनल जो किचन गार्डन था, गार्डन के पास वहां पर सीजनल वेजिटेबल्स थे which attract squirrels and the birds. तो ये बार बार अट्रैक्ट करते थे. A group of langur had even made their den. Den मतलब गुफा बनाना, अड्डा बनाना, जगह बनाना. तो यहाँ पर लंगूर ने भी अपनी एक जगह बना ली थी इन एन अश्वत्था ट्री. यहाँ पर जो अश्वत्था ट्री था उस पर उन्होंने
अपनी जगह बना ली थी. इट मीन्स उस ट्री पर वो आकर रहते थे. अश्वत्थ ट्री इट मीन्स पीपल का जो पेड़ था. अश्वत्थ इट मीन्स पीपल. तो पीपल का पेड़ जो था वहीं पे नजदीक में पीपल का पेड़ था. तो उस पीपल के पेड़ पर उन्होंने अपना घर बना लिया था. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन वेयर अ ग्रुप ऑफ लंगूर हैड मेड देयर den. तो कहाँ पर लंगूर ने अपना घर बनाया था? इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय. उन्होंने अश्वत्था ट्री में नियर बाय में उन्होंने अपना घर बनाया था. They had all become a part and parcel of their existence and daily life. अब ये जो था उनके रहने का, उनके अस्तित्व का और दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका था. A part and parcel, that is a phrase word. A part and parcel, that is a phrase word. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूज द फ्रेज वर्ड पार्ट एंड पार्सल. इट मीन्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, टू बी एसेंशियल पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा. तो you have to make your own sentences using this phrase word as like a education is a part and parcel of our life. Nature is the part and parcel of our life. कि नेचर जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है. तो इस तरह से यू कैन यूज दैट फ्रेज वर्ड इन योर डेली कम्युनिकेशन वे ऑल्सो. आप जो है अपने डेली लाइफ में भी इस फ्रेज वर्ड को यूज कर सकते हैं. और 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इन अ ग्लोसरी पार्ट. On that time you have to make your own sentences. Here we can ask the question for the A2 type. Describe the campus where the writer's family lived. On that time you have to describe it all. First point, the compound was a luxurious with green grass, colorful flowers and host of tall majestic trees. Second thing, the seasonal vegetable in the garden of the household. Third thing, the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. And fourth, a group of langur had even made their den in a Ashwatha tree nearby. So in this way, you have to write these 4 points to describing the campus. Now we will go ahead. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. Here the writer described एक छोटे से घटना, स्मॉल इंसिडेंट विच वॉज हैपन, जो कि एक सैटरडे आफ्टरनून में हुआ और उसका राइटर के ऊपर बहुत ही गहरा, प्रोफाउंड इट मीन्स गहरा, वी कैन से दैट वेरी डीप, गंभीर. तो उसका बहुत ही गहरा इफेक्ट राइटर पर पड़ा. Here we can ask the question when the incident was happening. The incident was happened on a Saturday afternoon. कि इंसिडेंट जो है वो सैटरडे आफ्टरनून को हुआ. Here we can ask the question for the question tag. A small incident on a Saturday afternoon. What was the question tag of it?
इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी. द लेफ्ट इट मीन्स डिडंट इट. इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा? डिडंट इट. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ इट. इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है. तो लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट. दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस. एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज a whole new dimension to the wonders of the God creation. Here the writer said that कि उनके आंखों के सामने उनको दिखाई दिया, प्रकट हुआ एक नया दृष्टिकोण दिखाई दिया. अनफोल्ड न्यू डायमेंशन इट मीन्स एक नया पहलू, एक नया दृष्टिकोण. न्यू डायमेंशन इट मीन्स दृष्टिकोण, एक देखने का एक नया दृष्टिकोण उसके सामने, राइटर के सामने दिखाई दिया. विच वॉज द वंडर्स ऑफ द गॉड क्रिएशन, जिसकी रचना भगवान ने किया था. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर राइटर्स आईज. कि राइटर के आईज के सामने क्या प्रकट हुआ, क्या समझ में आया. तो राइटर्स आईज unfolded before his eyes a whole new dimension to the wonders of the God creation. यहाँ पर भगवान की रचना का एक नया दृष्टिकोण राइटर को देखने के लिए मिला. This incident was happened. It was a few days into the पूजा vacation. अब ये जो घटना घटित हुई है, तो ये दुर्गा पूजा की जो छुट्टी थी, दुर्गा पूजा की छुट्टी अभी थोड़े दिन ही हुई थी. और उसी छुट्टी में राइटर जो है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए थे. Add a question tag of it. It was a few days into the puja vacation. तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा? Wasn't it? Just like for any other child, the holiday provided an opportunity for me to become engrossed in the various magazines and storybooks published, especially for the children in the festive season. जैसे कि हॉलीडेज, जो छुट्टियां होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए चिल्ड्रंस को टाइम मिलता है. दे स्पेंड देयर टाइम्स, क्योंकि उनके रेगुलर की पढ़ाई से कुछ अलग उनमें एक्टिविटी होती है. सम आर बिजी इन अ डांस, इन ड्राइंग. आइदर यू कैन से दे लव टू रीडिंग, so that they read different kinds of the book. So here the writer also engrossed in his different various activities. Engrossed it means तल्लीन होना, किसी काम को करने में लीन हो जाना. whole occupied, either you can say engaged in the focused, कि पूरी तरह से किसी काम को करने के लिए तल्लीन हो जाना. इट्स कॉल्ड द engrossed. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर द vocabulary. फाइंड आउट द one word for the whole occupied या engaged in, focused on. Find out the one word for it, focused on. We get engrossed. We get the word engrossed. It means focused on some work. Here we can ask the question, what the holiday? Yeah, what did the holiday provided? The holiday provided to child an opportunity for him to become engrossed in the various magazines and the storybooks published, especially for the child
in the festive season. जब उत्सव के टाइम होते हैं, फेस्टिव सीजन, इट मीन्स उत्सव का जब समय होता है, तो ऑन दैट टाइम so many different kinds of the books is publish होते रहते हैं. Here we can say using not only but also. From here the holiday provided an opportunity for me to become engrossed in the various magazines and storybooks published especially for the children in the festive season, using not only but also. So you can write, first of all you have to write full sentence. The holiday provided an opportunity for me to become not only engrossed in various magazines. अब यहाँ पे हम not only पहले लगा देंगे, तो not only engrossed in a various magazines but also storybook published specially for children in a festive season. Here we can ask the question for the true and false. Holiday did not provide the children an opportunity to read various magazines and the storybook. It's a true or false? तो मैंने कहा holiday did not provide. It means it's a false. Here we can say that the incident occurred during summer vacation. It's a happen. True or false? That is a false. This is not happen in a summer vacation. It's a happen in a puja vacation. Right? If we ask that the incident was a happen in a puja vacation, at that time this answer will come true. So that you have to be careful when you write this kind of the answer, true and false. Now we will go ahead. After a hearty lunch was a hearty, it means एकदम खूब भरपेट, मन भर के खाना, sufficient and wholesome, fulfilling. जब भोजन टेस्टी होता है तो आप खूब चाव से खाते हो, तो it's called the hearty lunch. It means for the lunch, describing word hearty. Find out the describing word for the lunch. तो लंच को डिस्क्राइबिंग वर्ड करने के लिए क्या आया यहाँ पे? हार्टी. My parents and my younger sister lay down for an afternoon nap. Nap मतलब झपकी लेना. Lay down मतलब लेटना. Here we can ask the question, who lay down for an afternoon nap? Afternoon nap के लिए कौन लेट गया? The writers, parents and his younger sister lay down for an afternoon nap. And I settled down with a storybook. और राइटर को जो है एक अच्छा खासा मौका मिला so that he settled down, बैठ जाना with a storybook. जैसे आपको जब टाइम मिलता है तो you are busy in a mobile and playing a different kinds of the game. Right? But on that time there was no facility of the mobile, so that so many childrens, they are either they play outside games or indoor games, and some children like to read the different kinds of the storybooks, magazines, and these kinds of the books they love to read. But nowadays children, they love to play PUBG and all these kinds of the game.
Here we can say that, ask the question, who settled down with a storybook? So who settled down? It means I is coming for the writer. The writer settled down with a storybook. Identify the tense. I settled down with a storybook. That is our simple past tense. Change into past perfect tense. Now you have to change these sentences into past perfect tense. How we can change? So you have to write past perfect. It means had plus verb ka third form. So now you have to write, I had settled down with a storybook. For this, you have to mind the tense rule. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading the adventurous story. मतलब afternoon में all person they are taking rest and there are the very quietness. बहुत ही शांति रहती है, so that it's a giving a very good time. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. Snoring, it means जो खर्राटे लेते हैं, it's called the snoring. The writer said that sometimes जो silence था, जो शांतिता थी, it was broken because of the snoring. सबके खर्राटों की आवाज आती थी. Here we can ask the question, why was the silence occasionally broken? अब WH के लिए भी पूछा जा सकता है, ये लाइन आपको दे दी जाएगी. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. Here you can ask the question from how also. How was the silence occasionally broken? So the silence was occasionally broken by the sound of writer's family snoring. Yeah, my family snoring. Right? So this time we can make the questions, WH questions. इतना आपको अंडरलाइन करके दिया रहेगा, by the sound of my family snoring. So you have to make the WH questions. How the silence was occasionally broken? Question mark. The intermittent, it means बीच में. The intermittent chirping of house sparrows. बीच में यहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती थी. The harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. और यहाँ पर कौवों के एकदम श्रील इट मीन्स कर्कश, उनकी एकदम कर्कश आवाज, कौवों की एकदम कर्कश सी आवाज जो ऊपर नीचे वो करते थे उससे आती थी. Of a kite flying high above the ground. Minute ticked by, समय जो है बीतता गया. I become deeply absorbed in the book. Absorbed मतलब लीन होना. राइटर जो है पूरी तरह से बुक में लीन हो गया. Here we can ask the question for the A2 type, like how did the family relax after lunch? दोपहर के बाद लेखक का परिवार किस तरह से आराम कर रहा था. तो here we can say, after a hearty lunch, the writer's parent and younger sister lay down for the nap, and the author, either you can say the writer settled down with a storybook, and the silence was occasionally broken by the sound of writer's family snoring. In this way, you can describe कि how they relax, किस तरह से जो है
वो रिलैक्स कर रहे थे. Here we can ask the question for the personal response. One question. Do you have a reading hobby and how do you pursue it? Some children can say that it's a personal response. So if you have a reading habit, you can say yes. And if you have a no reading hobby, आपका शौक नहीं है, तो you can say no. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे रीडिंग हैबिट है तो yes, I have a reading hobby. I read a lot of storybook, different kinds of the storybook. I keep on reading stories, novels, either newspapers, etc. We can say whenever I find a time, I love and enjoy reading, especially during the vacation times. Either you can say free times, it gives satisfaction to me. कि जब भी free time होता है, on that time, we read that. So in this way, you can say that. If you don't love to read the books, so you can say that. You know, I don't like to read I don't have a reading hobby. And after that you can mention what hobby you have. आपके पास कौन सी हॉबी है, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो. Which hobby you like. So in this way you have to respond a personal response questions near about 7 to 8 lines in your exam.